जिसके कारण सड़कें लगातार 8,730 हेक्टेयर लगातार 8,000 फसल खराब हो गई हेक्टेयर और किसानों के सामने फसल खराब स्थिति रवि किसानों के सामने मैं मांग करता हूँ स्थिति रवि एक केंद्रीय अध्ययन मैं मांग करता हूँ जिससे कि वहाँ के केंद्रीय अध्ययन जो फसल की क्षति हुई है किसानों उसका आकलन करके क्षति उन्हें मुआवजा दिया जा सके आकलन करके जिस तरह से उन्हें मुआवजा दिया जा सके केवल कि जिस तरह फसल का नहीं हुआ घरों का हुआ केवल बड़ी संख्या फसल का नहीं हुआ घरों का हो गई है बड़ी संख्या में रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था बंधे कई टूट गए लाइन पे कई पानी आ गया था बंधे हमारा जनपद कई दिनों से सड़कें हो गई हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से अत्यंत अलग हो गया था मैं चाह गया हूँ श्री उत्तम कुमार रेड्डी Speaker sir, through you, Speaker sir, I wish to bring a matter of urgent public importance. I wish to bring a matter of urgent public importance. The people of Telangana are strongly objecting. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of Kalyan Kani block, Boyagudam block, Sattupalli block, and Shravanipalli block, Sattupalli block. These coal blocks are co-located. These coal blocks are existing coal mines of a 100-year-old coal mines of a mining company, 100-year-old Singareni Coal Mining Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. It has continuous profits for 20 years. Bizarre decision. In a very the government of India bizarre decision. The government of India auction has the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks adjacent to the Singareni coal company now. The Singareni supplies coal company now power stations of supplies Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal mines, instead of allocating this coal mines company, coal blocks of Singareni putting up coal ministries, which is irrational and putting up auction, which is irrational and the auction of these 4 coal blocks. We demand that the auction of these 4 to the public sector company, Singareni Coal Company, be allotted to the public sector company, Singareni Coal Company. To the government, sir, like to also to the Prime Minister, the government during a visit to Telangana, Prime Minister had during a visit to Telangana not be privatized, had promised that the government of India is going ahead, but still the government of India is going ahead in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come in Telangana. He has replied last time. But he has replied last time that this is a government issue. He's replied that this is a government issue. Thank you, sir. I rise to speak about thank you, sir. Shrimp industry. I rise to speak about shrimp industry of Andhra Pradesh. Whatever honourable member from Telangana, and factually wrong, as alleged it is virtually and factually the auction wrong. Process is going on. Auction process from last 2.5 years going on. And from last 2.5 transparent years. And it is the most transparent system so far adopted. Nobody has alleged so far anything. Nobody has alleged the system of against the system of and this is also beneficial to the state. And this is also beneficial to the state. They can participate if state wants. And there are many states can participate. For example, and there are many states where there is no Bharatiya Janata Party ruling. Where there is no Bharatiya Janata Party ruling. You please listen. No. आप बोलिए. Sir, आप बोलिए. Sir, first of all, I would like to tell about first of all, I would like to tell about. You give me 1 minute. Auction process. Then give me 1 minute. Then I will tell. You whatever is happening. You tell me the process of whatever is happening. Auction method is happening through a. And as far as privatization is concerned, and as far as privatization is Telangana government, 51% is Telangana government. How can you privatize it? How can you privatize it? And see, this is not the question of allocating the coal blocks. This is not the question of allocating the coal blocks through auction. Everybody has to participate. System we have adopted now. This is the system we have adopted now. And I would also like to tell. In many other states, in many other states, Jharkhand, there also auction is going on. Jharkhand government are cooperating. Auction is going on. Those government what is their problem? Those governments are cooperating. Entire revenue, sir. Entire revenue through auction. It goes to the state government. The entire auction it goes to state government. The entire who are coal scam, they are talking all these things. Who are coal scam, they are talking all these things. उनकी समस्या है कि जो कोल स्कैम में है करोड़ों रुपए का कोल स्कैम में है वो लोग करोड़ों रुपए नहीं चाहते हैं वो लोग ट्रांसफर सिस्टम नहीं चाहते हैं
सरकार लाओ श्री कृष्णा सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लंच का समय हो गया। और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सभापति के साथ कुर्सी को जीनत बढ़ाते रहे। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं जब कि आप मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है और कितना बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है। ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि बड़ी कुर्सी पर हुस्न खूबी का मौका है। ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि बड़ा आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार आदरणीय सभापति महोदय, आप पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछली बार विदाई समारोह मिनट आपका समय चाहता हूँ कि मैं बोलूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूँ। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा ईंट गारे और लकड़ी से बनी हुई सदस्य हूँ। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल ईंट गारे और ऐसे में देश चाहता है कि यहाँ अच्छी बातों में न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और हमारे परिवार के मुखिया हैं राज्यसभा में देश चाहता है कि यहाँ अच्छी बातों पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहाँ से आवाम सभा का जो परिवार है आप हमें महफूज रखें और हमारी कि अगर हम सारे लोग यहाँ हमें बोलने का मौका दें क्योंकि आप देश के उच्चतम न्यायालय में आपने हमारी की लड़ाई लड़ी नुमाइंदगी और ये देश का उच्च सदन है मौका दें। हमें उम्मीद है कि आप हमें उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी बहुत और ये देश का उच्च सदन है। हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज आप इस उच्च सदन के हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे उच्च सदन के मैं दिल की गहराइयों से में आपको बधाई देना चाहता हूँ। पद पर आसीन हो रहे हैं मैं दिल की माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बधाई देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं याद दिलाया कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मुझे याद आ रहा था याद दिलाया कि अंग्रेजी फिल्म आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे में एक बड़ा प्रसिद्ध याद आ रहा हुआ था अंग्रेजी फिल्म मे द फोर्स बी विद यू जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। मे द फोर्स माननीय सदस्यों ने आपको आज चक्कर में डालने की भी सलाह दी है। अभी माननीय सदस्यों ने आपको सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में डालने की सलाह दी। अभी एक बात है कि युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश अच्छी तरीके से चले। अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है, हम सबका ख्याल रखने की है तरीके से चले। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में और मेरा विश्वास है हम सबका ख्याल रखने की है बातें रखी गई है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ साथ मेरा विश्वास स्वागत किया है। आज जो आगे आने वाले दिनों में इस भावना से हमारे कार्यकाल में भी रखे काम में भी रखेंगे। आगे आने वाले दिनों में भावना लगभग सभी सदस्यों कार्यकाल में भी काम में भी रखेंगे हो चुका है। एक आप मौके पे लगभग सभी सदस्यों का मिल चुके हैं जुलने
हो चुका। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जॉय हम सब आपको मिल चुके हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जॉय अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहाँ से आप बहुत ही वो राजस्थान से आप लेके आए गवर्नर का कार्यकाल ऑफ जॉय से, जहाँ से आप आए बहुत ही वास्तव सफलता यह है कि आपकी गवर्नर का कार्यकाल सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयता यह है कि आपकी हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे में इस सदन की पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल देखते हुए हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश हुए उपराष्ट्रपति बने हैं, कोशिश करेंगे जो एक प्रकार से किसान पुत्र जो आज प्रेरणा का उपराष्ट्रपति भी बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से एक बहुत ही प्रेरणा का से स्तोत्र भी शुरू करके जिस प्रकार से इन्होंने इस उच्च एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके मेरा पूरा विश्वास है उच्च के पद तक हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कार्य में भी कि अपने काम में भी उसकी झलक उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है हम सब जिस प्रकार से आपने बहुत गर्व महसूस करते हैं वरिष्ठ वकील के रूप में आपकी देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में टू बिकम सेवा की, न्यायालय की सेवा की, सुप्रीम कोर्ट विदिन 11 years of your youngest to become a senior advocate। मैं समझता हूँ इन द सुप्रीम समय जजेस ने भी कुछ 11 years की होगी, कुछ ऐसा अलग मैं समझता हूँ जिसके कारण आपको जजेस ने भी कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा अलग देखा होगा, जिसके कारण आप बहुत बड़ी सर्टिफिकेट बड़ा एक प्रकार से न्यायालय से मिला, बहुत बड़ी सर्टिफिकेट एक नई परंपरा जो अभी न्यायालय से स्थापित हो रही है दी गई। बड़े सामान्य घर से एक सामान्य परंपरा आने वाले जो अब इस देश सामान्य साधारण परिवार के सामान्य घर से सामान्य जीवन नेता वाले समाज के सामान्य साधारण आज बड़े बड़े परिवार के हमारी राजनीतिक नेता महिम राष्ट्रपति नेता आज बड़े बड़े पदों द्रौपदी मुर्मू जी एक छोटे से स्कूल में टीचर के पद से उड़ीसा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में आज बताया गया सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा, हम सबका मैं समझता हूं ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा
और मैं समझता हूं बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती है कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के लिए और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूं हर मेंबर का
हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं, when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction. And I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो। उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable former Prime Minister, Shri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful to the Honorable Members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amritkal, we cherish one of the world's finest constitutions
as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex and critical issues, exemplifying sublimity, engaging in dialogue, discussions, deliberations and debate marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I am sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much needed historic step, passed
the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription. After 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation, the President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I am sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India-ASEAN and East Asia Summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony
in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all, in togetherness, optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I am sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav. The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During these challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, one family, one future," unquote. This is much in keeping with our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour.
आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है।